सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल इंदरप्रीत कौर संघेड़ा। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। गलबात करांगे अमेरिका दीयां तमाम वड्डियां खबरां दी। अमेरिका अंदर कुछ उड़ानां प्रभावित होईयां ने। 400 तो वध उड़ानां देरी नाल चलणगीआं। इस दे पिछे की कारण है इह भी स्पष्ट कीता गया। दस्सिया जा रहा है कि कैनेडा विच इस समय जो अलग-अलग थावां दे उपर जंगल दी अग दी स्थिति बनी हुई है, उसदा असर अमरीका दे विच भी देखण नूं मिल रहा है। अमरीका विच कई उड़ानां नूं रद्द करना पै गया, जिस बारे अधिकारियों वालों जानकारी साझी की गई। उड़ानां रद्द होने कारण कई यात्री प्रभावित हुए ने। जानकारी मुताबक 400 फ्लाइट्स के उपर असर देखने को मिला, जिथे ये उड़ानां देरी नाल चलियां ने। फ्लाइट अवेयर तो इस बारे जानकारी सामने आई। इस दे पिछे दा कारण जो जंगल की अग के कारण स्थिति बनी हुई है, उसनूं दस्सिया गया। दस्सणयोग है कि कैनेडा विच जो इस समय जंगल की अग लगी हुई है, उसका असर अमरीका के कुछ हिस्सों विच देखने को मिल रहा है। इस बारे न्यूयॉर्क तो जानकारी सामने आई, जिथे दस्सिया गया कि बच्चों वास्ते रिमोट लर्निंग का प्रबंध किया गया। इस तो इलावा व्हाइट हाउस वालों प्राइड मंथ इवेंट नूं भी अगे पा दिता गया है। वाशिंगटन नैशनल की गेम नूं भी अगे पा दिता गया, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया राही साझी की गई। मौजूदा स्थिति के बारे न्यू जर्सी के गवर्नर भी बोले ने, जिथे उन्हां वालों मौजूदा स्थिति नूं इतिहासक दस्सिया गया है। एक होर वड्डी अपडेट सामने आई, जिथे न्यूयॉर्क वालों कैनेडा की मदद का ऐलान किया गया। उन्हां वालों दस्सिया गया है कि कैनेडा की मदद वास्ते फायर फाइटर्स भेजे जाणगे, जो जंगल की अग के उपर काबू पाउण संबंधी कदम चुकणगे। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन वालों भी इस बारे गल करदिआं दस्सिया गया कि उन्हां वालों मौजूदा स्थिति दे विच कैनेडा की मदद की जाएगी। अमरीका दे विच हवा कैनेडा की जंगल अग कारण प्रभावित हुई है। हवा के बारे लगातार अलग-अलग सूबिया तो जानकारी सामने आ रही है, जिथे गवर्नर्स इस बारे अपडेट साझी कर रहे हैं। अमरीका तो हवा की गुणवत्ता के बारे जानकारी सामने, जिथे दस्सिया गया कि पहला के मुकाबले हवा दूषित नजर आ रही है। इसके पीछे कारण है कि कैनेडा के कुछ हिस्सों में इस समय जंगल की अग लगी हुई है। कई थावां के उपर जंगल की अग बेकाबू दसी गई। हुण कैनेडा की इस स्थिति का असर अमरीका के कुछ हिस्सों में भी पिया नजर आ रहा है। गवर्नर वालों इस बारे जानकारी साझी की गई, जिथे उन्होंने अपडेट जारी की है। So we're here to provide an update on the alarming air quality due to the smoke that's continuing to drift down from the wildfires in Canada. I was on with the Canadian authorities last evening, and the scale of this is extraordinary. They said they had 10 million acres burning, that number was going to go up, they believe, to 12 million, that there are over 200 separate fires, and according to their senior authorities last night, 170 of them are out of, quote unquote, out of control. So we're monitoring the situation closely and coordinating with our state agencies and beyond our state as we need to. And you'll hear shortly from the folks beside me on what their respective agencies are doing. As Katie will mention, the DEP has declared another Air Quality Action Day for particulate matters for today, Thursday, June 8th. I think you've already made that decision for tomorrow as well, Friday, June 9th. In addition, state offices closed earlier yesterday at 3:30, and they opened later today at 10 a.m. this morning, again due to the poor air quality. Our top priority, as always, is to protect the health and safety of all New Jerseyans, so we encourage everyone to take precautions and stay inside if possible. What we have seen is unprecedented. As I mentioned, the widespread nature and uncommonly high levels of fine particulate concentrations reaching the unhealthy category is of a historic magnitude. And poor air quality impacts everyone, and exposure to high levels of particulate matter can cause difficulty breathing, chest pains, and asthma attacks, as Judy will discuss in more detail. Given the forecast for today, we continue to urge strongly all sensitive individuals, especially, meaning those with health conditions like asthma, heart disease, lung disease. कैनेडा की जंगल की अग की जो स्थिति है, उसका असर न्यूयॉर्क के विच भी देखने को मिलिਆ। गवर्नर इस बारे गल करते हुए दिखाई दिते, जिथे उन्होंने मौजूदा स्थिति नूं ध्यान विच रखदिआं कुछ खास गल्लां दी सांझ पाई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर वालों अग की गुणवत्ता का जिक्र किया गया। कैनेडा विच इस समय जंगल की अग की जो स्थिति बनी हुई है, उसका प्रभाव अमरीका के कुछ हिस्सों विच भी पिया है। न्यूयॉर्क दे विच भी एयर क्वालिटी
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We're seeing unhealthy air quality levels in Long Island, New York, Eastern Lake Ontario, Central New York, Western New York. And then we also have categories of healthy for sensitive individuals. So there's two different categories: unhealthy for everybody, unhealthy for people with sensitivities. That would be children, senior citizens, people with respiratory challenges. That would be the upper and lower Hudson Valleys. We saw yesterday some very disturbing numbers in New York City. They've come down from the 400 level, but we should never get complacent and think that the 200 air quality quotient index is satisfactory. But right now we're experiencing 209 in Brooklyn, 207 in Queens, and 191 in the Bronx. And again, normal is 50. Actually, quite often in the state of New York, we have pristine air. It's normally about 35. Frequently it's 35, normal is 50. So we look to see weather improving over a few days. We're having the rain right now. Apparently the particles attach to the rain and they come down, but it does have a chance to cleanse them. I can have more explanation on that from Jackie Bray. But we still have spikes, individual spikes of over 400 in some regions. And the message is this is not over. We might get a little respite, but I don't want people to let down their guard and to become complacent about this, because we have to be prepared for the winds to shift. This is the unknown. We're tracking the large plume that is originating from primarily Nova Scotia, eastern, and also Quebec, but also, knowing that this is going to continue to have a negative impact on our health. I don't think there's a single person who hasn't felt something different. More frequent coughing and just a tightness in the throat, a watering of the eyes. And those are for people who are healthy, for those who have... ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। It's a testament to the depth, breadth, and I would argue the intensity of our cooperation and coordination, which continues to exist between the United Kingdom and the United States. There's no issue of global of importance, none, where our nations are not leading together and where we're not sharing our common values to make things better. In our conversations today, we continue to build on all that we've achieved over these past months. We discussed how we can continue to adapt and upgrade our partnership to ensure our countries remain at the cutting edge of a rapidly changing world. Our economic partnership is an enormous strength and source of strength that anchors everything that we do together. We want to harness that power to make sure we're creating good jobs and supporting working class families in both our countries. And that growth is shared broadly and no one gets left behind. Xbox ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਬੌਕਸ ਗੇਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। US ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। FTC ਨੇ ਟੈਕ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। FTC ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਬੌਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। FTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਪਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।